आज हम आपको दिखाऊंगा VLOOKUP का ऑल्टरनेट 3 फॉर्मूला। क्या क्या है 3 फॉर्मूला? इंडेक्स मैच, that is index match. Second is Xlookup. Third is VLOOKUP plus choose. Why all these formulas are applicable here? Because यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो एम्प्लॉय कोड है। एम्प्लॉय कोड आपका राइट साइड में है, लेकिन VLOOKUP तभी काम करता है जो जब एम्प्लॉय कोड आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इस साइड में होगा। ओके, सो यहाँ पे VLOOKUP काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे VLOOKUP काम नहीं करेगा। सी, तो इसीलिए आपको ये 3 फॉर्मूला दिखा रहा हूँ। जब जहाँ पे आपको VLOOKUP काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपका ये 3 फॉर्मूला काम करेगा। तो आप एक बार देख लीजिए। इंडेक्स प्लस मैच, Xlookup and VLOOKUP plus choose. Okay, so I'm showing you the first one, index plus match. Index array, this is your array because this will be your answer. So this is your array. I'm pressing F4 to be fixed. Now the row number, this row number wise context wise काम करेगा ये. So the row number I will put here match. मैच में क्या है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है, देखिए इसका सिंटैक्स एक बार देख लीजिए। मैच, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप। सो लुकअप वैल्यू, व्हाट इज माय लुकअप वैल्यू? ये है मेरा लुकअप वैल्यू, क्योंकि मैं एम्प्लॉय कोड वाइज यहाँ पे आइटम ला के रखूँगा। तो एम्प्लॉय कोड है आपका लुकअप वैल्यू। सो आई एम प्रेसिंग 3 टाइम्स F4 बटन, ताकि 3 टाइम्स में क्या होगा, आपका कॉलम फिक्स्ड होगा। ओके, so comma lookup array, this is your lookup array because this is my lookup value and this is my lookup array. I will extract from this employee code, so that's my lookup array. So I'm pressing again F4 and exact match, that is 0. Now the column number, see comma, and now the column number. So array means index, एंड यहाँ पे रो नंबर में मैं मैच फिक्स्ड किया था, मैच फॉर्मूला देके ये फिक्स्ड किया था। एंड नाउ कॉलम नंबर, मेरा कॉलम नंबर होगा 1, क्योंकि मेरा आइटम यहाँ पे एक नंबर पे है, कॉलम नंबर ए, सो एक नंबर पे है, तो मेरा कॉलम नंबर होगा 1। सो ब्रैकेट क्लोज। ओके, सी आई एम ड्रैगिंग, सी नाउ द एक्स लुकअप ऑफिस 365 में काम करेगा। तो एक्स लुकअप आपका ये इंडेक्स मैच एंड वी लुकअप चूज आपको पूरा इजी कर दिया। तो सी एक्स लुकअप, सो एक बार देख लीजिए एक्स लुकअप का आपका सिंटैक्स क्या है। सी, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, if not found match, there are optional because the square bracket, these are within the square bracket, so they are optional. So mandatory is lookup value, lookup array and return array. So we can have lookup value. Xlookup is lookup value, this one. Employee code is a lookup value. By pressing F4 3 times, because I'm doing fixed the column wise, because I will drag the column wise report, this row wise, this column. So if I don't do the, there is won't be any problem, there won't be any problem. Okay, so the lookup array, this is the lookup array. Pressing again F4, this is your lookup array. And then return array, this is your return array. Okay,
because this will be your answer. And if not found, see, if not found, so if not found, there is nothing to do, comma, and that exact match, that is 0, and that bracket close and enter. Okay, see the same result also is here. Now I'm coming in VLOOKUP plus choose formula. So how it will work? Just have a look. VLOOKUP, lookup value. This is my lookup value. See the employee code. This is my lookup value. So what is the syntax? Just have a look. The syntax is lookup value, table array, the column index number, and the range lookup. Range lookup is in optional. So the lookup value, table array, index number is mandatory. So what is my lookup value? Lookup value, this is my lookup value, employee code. And that choose formula. This table array. In this table array, I will put the choose formula. Because choose formula क्या करता है, मेरे को एक टेबल बना देता है, एक वर्चुअल टेबल बना देता है choose formula. So here I am putting choose formula. See the choose formula syntax. Index number, value 1, value 2, value 3, like this. So what is my index number? So index number, I will create the index number manually. 1, 2, 3, 4, 5, 6, like this we can create. So the index number, curly bracket close. This is my index number. Why I am putting here 1 and 2? Because employee कोड को लाके एम्प्लॉय कोड वाइज ये क्या करता है, आइटम को लाके देता है. सो एम्प्लॉय कोड हियर 1 index number, so thinking that employee code 1 and that item code is 2. So the value is this 1. My lookup table से मेरा value है 1 and that value 2, this is my value 2, closing bracket, and that column index number, comma, and that column index number. See the column index number होगा आपका 2, क्योंकि 1 मेरा एम्प्लॉय कोड मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे इंडेक्स, एंड 2 इज माय रिजल्ट. सो 2 इज माय कॉलम इंडेक्स नंबर, comma, and the range lookup, that is 0, bracket close. See, enter. See the result, the same result. See the same result. Index match, Xlookup, and that VLOOKUP plus choose, the same result. ओके, सो ऑफिस 365 में ये Xlookup काम करता है, बाकी ये नॉर्मल आपका एक्सेल में काम करेगा. सो आप जिसका पास आपका ऑफिस 365 नहीं होगा, सो आप ये इंडेक्स मैच प्लस VLOOKUP चूज में आप काम कर सकते हो. ओके, थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट कीजिएगा. अगर आपको कोई दिक्कत हुआ समझने में तो कमेंट बता दीजिएगा. थैंक यू.